नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत। बिल्कुल नए विषय के साथ आयुष समृद्धि इंटरनेशनल वेबिनार सीरीज। आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने और एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट। हमारा भारत भी लगभग 70% समुद्र की सीमाओं से घिरा है। हम सभी पसंद करते हैं समुद्र के बीच पे जाना, लेकिन सावधानी भी जरूरी है, ये हम भूल जाते हैं। तो आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि समुद्र के सहकत हमारे पास खुद आशीर्वाद देने को आए हैं। नमस्ते नमस्ते। आ गए हरिओम हैं, हम हरिओम। जुड़ गए हैं। तो समुद्र मीन्स सहकत बंगला में एक ऐसा शब्द है जो समुद्र के किनारे को इंडिकेट करता है, मीनिंग उसका वही है। तो हमारे साथ हमारे डॉक्टर सहकत कुमार बसु जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारी विद्वान वक्ता डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी मैडम जुड़ी हुई हैं। दोनों का हार्दिक स्वागत। और आज हम लाभान्वित होने वाले हैं ऐसी प्रिकॉशंस पे, ऐसी गाइडलाइंस पे, क्योंकि हमारे यहाँ पास में पहाड़ भी है, पास में समुद्र भी है। हम खुद कलकत्ता वाले समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो समुद्र के पास जाना भी सावधानी भरा है। हमारे शेखर जी जैसा ब्रिलियंट है, बहुत दमदार है। तो ऐसे ही गाइडलाइन यदि हमें सब समाज को मालूम पड़ जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत उत्तम। मैं आदरणीय मैडम डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी मैडम का स्वागत करता हूं और डॉक्टर सीपी शर्मा जी और लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर को नमन करता हूं। डॉक्टर एस बी को भी मैं नमन करता हूं। आदरणीय मैडम सुपर्णा सान्याल मुखर्जी मैडम। शर्मा जी, बिफोर मैडम स्टार्ट्स, थोड़ा आपको बता दूं, आपने जो पोस्टर 19 के बनाया है ना, एक 20 के ऊपर और एक जो मेडिकल क्या कहते हैं उसके उसके दोनों के टाइम आपका एक ही है, 9 पीएम की क्या है, तो एक को 9 पीएम और एक को 10 पीएम करेक्शन थोड़ा कर दीजिएगा। हाँ, मैं अभी करता हूं, अभी करता हूं, ठीक है लगे। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैडम प्लीज कंटिन्यू। थैंक Okay, thank you very much. Very good evening to the all dignitaries over here. Really, today is the auspicious time and auspicious day and auspicious topic. Because if we can think of that, the शेखर जी is हमारे साथ है, हमारे पास है और हमारे वेबिनार में भी है। तो समुद्र सैकत को ठीक करना और करेक्ट करना एट द सेम टाइम, सैकत जी को भी वो मार्ग में चलना है जिस मार्ग में समुंदर एंड समुंदर के उस पार भी जाना है उनको, क्योंकि समुंदर वो है, सी बीच वो है जहाँ में हम लोग सब मतलब दिल का बात कर सकते हैं, हम छुट्टी मनाने में जाते हैं। सो दिस इज द सेट वी कैन से दैट द sea beach is the very pleasure and very interesting thing in the Hindu culture and Hindu mythology. Just because all the rivers as get into the Shamundar, and that's why it is very important part of the uh, our culture, our heritage, our passion, our life sustainability. Everything is amalgamated with this Shamundar cycle. So there are so many tips. That means the protection we should take care. The government of India and the other governments also taking care. So those people who love the sea and turn their vacations into a beach trip, every time they have a chance that the guys need to know that there is a huge responsibility in our hands. What are those responsibilities? Like the beach maker, this beach protection, cleanliness of the beach, and very important, take care of the beach and preserve its beauty for future generations. So basically, if we can look into the sea beach, there is a plenty of the wild animals, especially the sea animals, which is also very commonly find it out in the sea beach.
So we have to protect. That means the ocean represents more than 60% of the world's territory, and it is up to us to conserve it and healthy in order to keep enjoying it. That's why we can say that. So we should not dispose our property on the sea beach. So the enjoy a delicious meal, or you can make yourself cool with the drink, because it is the trend. The young generation used to take their drinks on the sea beach, and they used to enjoy, and they used to throw it out, all the plastics. So we have to protect the sea beach from this plastic pollution, because this, if we can throw it out, any plastics on the beach, so it is enter into the sea. And see, though the sea nature is, it can return back you, but sometimes it may enter into the sea, and which is the make the pollution, the sea water, at the same time the sea beach. If the sea beach is polluted, then the wild animals will be polluted, because they are not habituated to the plastics. So avoid using this single use plastic production, plastic uses. So which we can take the foods and other materials which it have to be protected, and respect the wildlife respectation. And if we can respect wildlife, those wildlife is also correlated, and we have the symbiotic relationship with this wildlife. So there are varieties of wildlife, so birds, fish, turtles, marine mammals, which we are very free on the sea beach, and they can get, in Russian it is said that the zagaras. That means that they are taking the sun bath. The sunrise is so high in the sea beach, and they are taking the bath in this the sun, because these sea animals, the wildlife animals, are also taking the sunrises. And this protection of to avoid the disturbance their habitat, especially the feeding, their food habit, and the same time the natural habitat, which should be protected and restored. So then it is also very important, we should not touch or remove any marine creatures from the beach, as this can harm them and the disturb their ecosystem. To respect their natural environment and to keep a safe distance for this the sea animals and the sea beach animals. So local rules and regulation we have to follow. There is the rules and regulation. Protection Act is also there. We should follow it out. And every beach in special blue flag certificate beaches are there. So we have to follow it up. It has the own set of rules and regulations that are designed to protect the beach and its wildlife. So when we are visiting the sea beach, and there is a different animal, the different wildlife, though it is the same sea, but the parts are different and the territorial nick is different. That's why the animal variation we may follow in the different types of sea. Like the Goa sea beach, there is a different animals. The Bhubaneswar Puri sea beach, then the Digha sea beach, and if we can get into the Andaman, there is also a sea beach, and there animals are also different, though the sea animals, but the varieties and species are also different, just because of the geographical definitions. So that's why we have to follow the guidelines for swimming and water sports, especially the people, those who are enjoying sports, they also follow the water sports, and we have to protect the beach and its ecosystem. So we have to be environmental friendly sunscreen, friendly towards the sunscreen, which can protect us, give us the vitamin D, and also giving us the restoration of the sun power. That is the ultraviolet. While we are living in the visual, so we have to take and we have to protect ourselves from this the sea beach protection, and the support of local people, and we have to take the support from the those who are habitat, and those who are living, especially the human being, those who are surviving just beside of this the sea beach. Their economic, socio-economic, socio-cultural aspects are also related with the sea beach, and it has to be local support. And this local support, they know the
which type of animals is surviving in which beach, and what is the need for them, which environment is giving the sustainability, and this sustainability is also protection the human being and the other creatures. So and it's also very important, sea water has to be restored, the sea water, because the indirect measure of taking care of the oceans and the beaches is not wasting water. So we always wasting waters. And when it comes to using the beach showers, keep in mind that the water is a very valuable natural resource that should not be wasted. It should be the super helpful not to use this service when there is no need and to save water as much as it is possible. And it is very important and has a huge impact on the environment. So this is the more careful sensation of the sea beach. At the same time, we have the sea beach should be eye soothing. So it should be the very nice, very beautiful. This eye soothing, then the attractions of the tourist make enter into the sea, and they can enjoy the sea beach, and the sea beach can giving them the platform to enjoy the seashore. The seashore is very important, and this will give you the rhythm of life, your inspiration, your meditation, and this water, plentiful water of sea will brings you the prosperity, because if we can see the wave of the sea which comes to the beach, so that is the prosperity, the flowing of your prosperity is flowing of your positiveness, and it is also encourage you in each and every respect. So that's why sea beach is very important parts of us. And the Ayush also have the impact on the sea beach, because the meditation, the yoga, morning walk, evening walk also done in this sunrise, sunset. These are also the very beautiful scenario of the sea, which will enhance the life expectancy, which can be protected our life and our generations, the older generations and new generations too. So thank you very much. Thanks for giving me such an opportunity. And really, it is a समुंदर सैकत जो है वो हमारे really very beautiful and sensible, and we can enjoy it for our life, all the life. Thank you very much. Thanks a lot. हरिओम। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार मैडम। मैं अब डॉक्टर शैकत बसु जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। वेलकम डॉक्टर शैकत, वेलकम। Thank you. Thank you, Sharma ji. First of all, thank you so much for putting it in Bengali with my name and stuff. I'm so humbled and honored for the present, the honor that you have provided me. So thank you very much. It's a pleasure to be a part of this platform. I extend my sincere gratitude to Madam for very nicely introducing the concept of beach and also the importance for the beach conservation and other parts. So I will just conclude. I will continue from where Madam ended by saying that beach or the sea coastal or seashore, in whichever way we say, are a same complex, or are these the same thing, or we have put an added value to that. The coastal area, or this is in area, is where the land ends and the sea starts, but this is what we see on the surface of the water. If we look into very deeply, if we look into the geography and the geology of the part of the coastal areas, we will see that the sand dunes and stuff extends quite beneath under the water too. So it is way a few kilometers down under the sea. The part that we see adjoining to the coastal areas in the seas, that has been transformed into, for both for tourism, commercial purposes, for the purpose of visit, for the purpose of transportation, that part of the coastal area of the sea is considered to be a sea beach.
Not every country or not every ocean does have a proper beach. A beach means a place where we will have long stretch of sands, where people can rest and stand, where even vehicles can move and stuff. But in many countries, you will see the coast of the sea, particularly say in Canada, it does not have any beaches at all, in the sense that most of the beaches are very small or they are extremely rocky in nature. So it is not safe to walk or to stand or place there. But if we look into India, United States, Mexico, and various other countries, you will see that they have very long extended sea beach. The sea beach of of the Bay of Bengal, or the sea beach that extends in West Bengal, in Orissa, as well as in parts of adjoining Bangladesh, particularly this Cox's Bazar area, has a 127-kilometer long sea beach, which is considered to be the longest sea beach of the world. I have traveled along that way and I've seen it spectacularly beautiful, and it's basically underdeveloped because Bangladesh does not have enough investment. This was during the time of Sheikh Hasina that I visited Bangladesh in 2020. You could see it is nature. There is a beach means there is commercialization in some areas where some hotels have places of enjoyment, rides and other things available made there. But the vast 127 kilometers of the Bangladesh in the Cox's Bazar area or the Cox's Bazar district is hugely uninhabited, with trees and plantations on one side and the vast open sea on the other. It is spectacularly beautiful. So similarly, our sea beaches across West Bengal, Orissa, Tamil Nadu, and what you call this, Andhra Pradesh is spectacularly beautiful, and it is different with respect to the beauty that we see across the western states of Gujarat and Maharashtra, Goa, and stuff. So the sea is much rougher here compared to that in the western part, but we do have these long coastal sea beaches that is considered to be as place of beauty and a place of great tourism that not only drags tourists from inside the country but brings tourists overseas, which helps in earning us a significant foreign exchange. Particularly the beaches in Goa and other areas are very, very popular around the world. So we are lucky to have the beach. Beach is that commercial part of the coastal dune that has been transformed for commercial and tourism purposes, as also for research and other purposes that we could use. Even, for example, the Andaman areas, Madam Suparna Madam is going on September for a 15-day trip to Andaman and Nicobar Islands for doing research and stuff. So the Andaman has extensive sea beaches areas where people visit in huge numbers, and it is spectacular. There is a lot of marine life, and they have what you call that we do not have in other parts of India is marine reserves. Like, we have national parks, we have sanctuaries, forested areas, and those places where we protect animals on land. But in Andaman and adjoining areas, they are our protected islands where no one is allowed to visit, particularly to protect the tribals and other people who live, the indigenous people who live there. But also there are marine bioreserves, which are spectacular stretches of the ocean, which has beautiful corals, fishes, and other areas where very restricted tourism is allowed under monitoring and surveillance of the Indian Navy as well as the government of India. But it is spectacularly beautiful because it has a wide diversity of species. This concept of marine bioreserves or biospaces or bioresource areas along the coastal dunes, along sea coasts or shores, has been coming up in many parts of the country, because beaches are not just for commercially important, they are also very biologically active. If you look into the Gaharmatha beach of Odisha, hundreds and thousands of green olive ridley turtle comes and lays their eggs. The females will come once a year to lay their millions and billions of eggs. The eggs will hatch, and the hatchlings then start moving backward into the ocean. And this is why the life cycle of these olive ridley turtles continues for years. It used to be a very popular tourist spot. There used to be lots of hotels and stuff. The government of Odisha, few years back, have taken absolute strong consideration of making it a wilderness zone, restricting tourists. Only research people associated with the work with conservation of turtles are allowed to visit this area, other than forest department officials and guards, as well as hotels and everything. Our commercial activities along that particular stretch of the beach has been completely eradicated to protect this marine species. So, and if you go into Andaman or in Goa, you will see that there are popular festivals that are conducted on these great beaches, which has huge extensive areas, usually known as the Andaman Sea Festival, Andaman Sea Beach Festival,
festival or the Goa festival and stuff, where the beaches become a center or epicenter of cultural intermixes. The history of the land, the history of the people who have lived there for a long time, whether it is in Andaman or in Goa, where the traditions, their dances, food, everything, cuisines comes together, and there are stalls. Just like fairs, it is held in huge popularity, and there are huge number of people who likes visiting the beach festivals in these areas, particularly in Goa and Andaman, which is extremely popular not only for the tourists in India but also from the abroad. So if we look at the beach, you will understand that it is the complexity of biological, geographical, and geological realities of our life. It is also associated with the tradition of people, their history, their ancestry, even those fishermen who go and fish either in boat in the shallow waters or in the deep waters of the ocean in the coastal areas of India. They also use the beach as a docking area where they store their boats. This is where they load their canoes and boats, and they will go into the open ocean after offering some kind of puja and worship down there. And the beaches vary from in one area to other. If you go into the Sundarban, the estuarine area where salt water is mixing with sweet water, there are mud flats down there. There are not much sandy areas down there. So along the edges of the Sundarban, you won't find beaches. Beaches are there where you will have long uninterrupted stretches of sandy areas where it is inundated at some point of the day with the water, and the water recedes, and it is a center for social, cultural, religious, commercial, as well as tourist spots for the development of the economy, as well as it carries a history of the tradition and culture. And in the same way, the beaches are also sensitive because there are, if you go into many coastal areas, you will see that there used to be a lot of the crabs that come and make their nest. In many parts of Orissa, there are islands across the sand dunes and the coastal areas which turn red in color. Why they are turning red? Because these are small red crabs that are present, and they live and they breed and they survive on these sea beaches, and it's a spectacular view. It turns the entire beach, instead of orangish or whitish, completely looks reddish because they are flooded with small crabs. It's a spectacular view. Many tourists go there, but because of overrunning of the tourists, many of these habitats have been damaged in this part. So there has been steps, or there it is necessary to take steps to protect the beaches from the biological erosion that we are saving, and also, as Amazon has said, the pollution that we are having. With more people coming to the beaches, as beaches becoming more part of our socio-cultural life, socio-economic life, as well as socio-religious and socio-cultural aspects of our life, carrying our heritage and tradition, it is also our responsibility not to make the beaches dirty. If you go into Puri Sea Beach in Odisha, you will see that they have placed a lot of the baskets, and even the people who are selling small stuffs or food items and stuff, they are very responsible. They will come and tell the tourists, sir, please don't throw your trash and stuff. Either give it to us. They have a garbage collection bag in which they are collecting the waste materials, or they are putting it in the baskets. So there has been an education and awareness in that particular sense. But in the same way, if we come to the Digha, which is another sea resort and has a beautiful beach in West Bengal, there is very little awareness and consciousness about the beach pollution, because people are indiscriminately dumping plastic bottles, stray out food, cigarette butts and whatnot, everything into the seawater without this consciousness taking part. So beach is not only a biological, geological, or a geographical entity. It is a connection of our land with our heart, with our history and tradition. We need to protect our beach to prevent the biodiversity of the beach, to prevent the cultural heritage, and also to prevent our history, and to prevent it from erosion, so our next generation can enjoy the spectacular beauty and the openness of the oceans and the seas by exploring the beaches. So it is important that we protect our beaches, we conserve the marine ecosystem areas in and around there, protect our estuarine areas so that we are not overrunning them with over tourism, so that is impacting the balance of biodiversity with too many people moving into the area, or overcatching by fishermen who are operating in the area. Everything needs to be done in a sustainable manner. So if the beach survives, the people will survive too. In that particular context, beach
is equivalent to human history, human culture and tradition, and also to the local biodiversity, geography, and geology. With this, I conclude my presentation. Once again, Dr. Sharma, thank you so much for honoring me with the naming. It has always been a pleasure and will continue to be a part of the AYUSH platform. Thank you very much. बहुत बहुत आभार डॉक्टर शेखर जी, बहुत बहुत आभार आपका। सेकत ने सेकत के विषय में बताया, यही हम फॉर्चुनेट है। गजब है, गजब। Thank you so much. Thank you. मैं अब डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर को और फिर सीपी शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय गुरुदेव लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर, आदरणीय गुरुदेव। नमस्कार सभी विद्वानों को। अभी जो चर्चा सत्र हुए उसमें मुझे सी सरपेंट डे के बारे में जो आयुर्वेद की विचारधारा है उसमें भी, जैसा शर्मा जी ने बताया, बहुत कुछ काल्पनिक परिकल्पनाएं दी हुई है। और इवन कि यहाँ तक कि ज्वर का भी स्वरूप दिया है कि रुद्र के निश्वास से ज्वर उत्पन्न हुआ, उसका क्या स्वरूप है। तो वो भी एक क्रोध भैरव के रूप में स्वरूप देते हैं। वैसे ही आईफेन है, हम लोग जानते हैं पापावर सोमनीफेरम का फ्रूट का लेटेक्स है और हम इकट्ठा करके काम में लेते हैं। किंतु आयुर्वेद के ग्रंथों में कुछ परिकल्पना ऐसी भी दी है कि समुद्रेष्वपि जायन्ते विषमस्या तो चतुर्विधा, 4 तरह की विषमत्स्य होते हैं। तस्य फेनम, उनका जो झाग निकलता है वो आईफेन है। और उसके अभाव में हम खाकसजम ग्राह्यम, मतलब जो पौष्ट का है उसको लेना चाहिए। तो पहले परिकल्पना ये थी कि सारा विश्व जो है जांगमोद्भिद पार्थिव 3 तरह का है और हर चीज हम तीनों में ढूंढते हैं। और आज जो है साइंटिफिक युग आ गया और विशेषज्ञ हो गए हम लोग, इसलिए शिलाजीत का स्टैंडर्ड तय नहीं कर पाए। क्यों कि आज के जो वैज्ञानिक है भौतिक स्वरूप को देखना चाहते हैं और उसके बिना उसमें स्वीकार्यता नहीं होती। तो साइंटिस्ट सीधा पूछते हैं कि सब, अगर ये हर्बल ड्रग है तो बोटनिस्ट काम करेगा, अगर ये मिनरल ड्रग है तो जियोलॉजिस्ट काम करेगा, और अगर ये प्राणीज द्रव्य है तो प्राणी विज्ञान वाले इसमें स्टैंडर्ड बनाएंगे। तीनों जब मिल कर के आ रहा है उसके लिए स्टैंडर्ड बनाने में हम लोग असफल हो रहे हैं। तो हमारी ज्ञान की एक सीमा है। आज के युग की विचारधारा और पहले की होलिस्टिक विचारधारा में अंतर है, इसलिए इस तरह की बात हम लोग सोच सकते हैं कि उन लोगों ने परिकल्पना की। किंतु आज बहुत सारी चीजें ऐसी है जो प्रैक्टिस में नहीं है, हमने देखा नहीं, और शास्त्र में अगर लिखा है तो कुछ तो उसका आधार रहा होगा। समुद्र मंथन की जहां तक बात है, सर्प से परिकल्पना की, सुमेरु को वहां पे आपने एक स्तंभ बनाया और मंथन किया, तो उसके डिकोडिंग में बहुत सारी विचारधाराएं आती है कि साहब उस समय वैज्ञानिक सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में जो निर्णय आया उसमें इस तरह का आया कि अमृत कलश विष कलश दोनों निकले थे। तो अमृत कलश तो सभी लालायित थे लेने को, किंतु विष को कोई लेने को तैयार नहीं था। तो इस के आधार पे 8 ग्रह से 9 ग्रह हो गए। तो ये जो परिकल्पना है या दशावतार का क्रम है, इसको साइंटिफिक डेवलपमेंट में विचार करें तो मत्स्य कूर्म वाराह, तो ये मानव के जीवन में प्राणी शास्त्र में जो विकासवाद है उसको करते हैं। किंतु उसकी जो लैंग्वेज है वो मैथोलॉजिकल है, साइंटिफिक नहीं है आज के युग के अनुरूप। किंतु उन्होंने जो परिकल्पना की और उसको डिकोड करते हैं, तो कुछ इस तरह का आयुर्वेद का अवतरण है। वैसे रसशास्त्र का भी अवतरण है और शिव वीर्य से हमने सभी धातुओं सृष्टि की परिकल्पना करी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता साइंटिफिक वे में, किंतु फिर भी उन्होंने प्रकृति और पुरुष के आधार पर इसको समझाया। तो रूपक के रूप में है। और इसमें ऐसे ही नाग की जहाँ बात आती है तो सर्प ही हो ऐसा नहीं है, पहले नाग जाति होती थी। तो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को भी माना और चरक को भी माना। और आज हम चरक संहिता पढ़ते हैं, वो कोई न कोई अवतार पुरुष हैं और उनमें इतने गुण थे, तब हम आज श्रद्धा से याद करते हैं। चाहे वो नाग वंश के हों या उनका जो अ, है डीएनए वगैरह आज देखें तो मानव का ही मिलेगा। किंतु नहीं, आज की विचारधारा और साइंटिफिक बेसिक अलग है
मूल बेसिक अलग होने से हम तुलना भी नहीं करते। इतना ही कह के मैं धन्यवाद दूंगा पवन जी को कि मुझे ये कहने का अवसर दिया। और सब इस तरह की कल्पना हर द्रव्य के साथ है, रसशास्त्र में उत्पत्ति की। तो सब किसके दांत से मोती पैदा हुए, किससे क्या हुए, तो वास्तव में ऐसा होता नहीं। और फिर कवि लोग हैं, परिकल्पना करते हैं, तो स्वाति एक गुण तीन। और फिर उसने कहा कदली सीप भुजंग, और तीनों में स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरेगी उससे कर्पूर भी बनेगा, सर्पविष भी बनेगा, और मोती भी बनेगा। तो ये जो कवि की कल्पना है वो तो वास्तव में सही है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उनकी विचारधारा भी परिकल्पना होते हुए भी आगे आने वाले समय में वो सत्य भी होती है। इतना श्रद्धा से हम इसको स्मरण करते हैं, ताकि कभी कोई ये नहीं कहे साहब हमने सबसे पहले आविष्कार किया। जब परिकल्पना करते हैं तो फिर वास्तविक महल भी खड़े होते हैं। इस तरह के एक कॉन्सेप्ट भारतीय दर्शन में है। धन्यवाद। नमस्कार। पवन जी। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, बहुत बहुत आभार, आपने सच कहा। बिल्कुल यही सत्य है, यथार्थ है। मैं आदरणीय डॉक्टर सीपी शर्मा सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर सीपी शर्मा सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, स्वागतम सर, स्वागतम। सर 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 नमस्कार। जय हो, घर आ चुके हैं आप, जय हो। श्रद्धेय गुरु प्रवर लक्ष्मीकांत जी को सादर नमन। और हमारी आज की इन दोनों वेबिनारों से जुड़े हुए मूर्धन्य विद्वान एनडी शर्मा साहब और शौकत बसु जी, और द्वितीय वेबिनार से जुड़े मैडम मुखर्जी एवं शौकत जी। तो एक में तो बीज वाली बात आई, बीज की सर, ये हमारे यहाँ भी देश का वर्णन है सर, देश का। उसमें अनूप, साधारण देश, जंगल देश और अनूप देश। तो इस ये हमारे जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम वहाँ की जलवायु, वहाँ की बीइंग आयुर्वेदज्ञ, वहाँ की व्याधियां और उनकी चिकित्सा, इसके बारे में हमारे को थोड़ा सा अपना आयुर्वेदीय ज्ञानवर्धन करना चाहिए, और उसके बारे में सोचते हैं। और वहाँ हम अ, आरोग्य के लिए अनुपदेशीय द्रव्यों का, साथ ही गुरुजी लक्ष्मीकांत जी ने बताया। तो इस नाग वाली सर एक बात मेरे को भी सर वाली याद आती है। हमारे यहाँ वैद्य सुरेंद्र बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। सुरेंद्र बहादुर शास्त्री जी ने कचेरावली में प्रैक्टिस करते थे। एक हमारे बहुत बड़ी फर्म है यहाँ पर साड़ियों की, भवानी शंकर। उनकी मदर को 90 साल के बाद दोबारा दांत आने लगे सर। तो दांत जब आने लगे और बाल उनके काले होने लगे, तो उनके पास, वो उनके वैद्य थे, तो उन्होंने बताया क्यों। अरे बोले कि इनको जब डायरिया हुआ था तो मैंने इनको एक दवाई दी थी, वो जो सूची भरण रस था जिसमें सर्प विष का प्रयोग है, तो वो हमारे चिकित्सा में अल्प मात्रा में शोधित और सही रूप से संस्कारित कोई औषधि यदि हम बना पाते हैं इस तरह की, तो वो निश्चित ही अमृत तुल्य होगी। दूसरी एक बात आ रही थी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहां बताया कि अमीबा, अमीबा के जितने टुकड़े कर दो तो उतने अमीबा बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ सर्वप्रथम जब सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी को दिया, तो ब्रह्मा जी ने नारद, सनक सनंदन, सनत कुमार, अयोनि संतान पैदा की।
अयोनिज संतानें ज्यादा, जब उनसे कहा गया कि सृष्टि निर्माण करना है, आप लोग शादी करो, तब फिर वो संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप लिया। तो अयोनिज संतानें जो थी, उन्होंने क्या किया, पैर की एक नस ले ली और उससे बताते नारद जी पैदा हो गए। इस तरह से उन लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो सीमित थी। तब भगवान विष्णु और शंकर जब इकट्ठे हुए तो अर्धनारीश्वर रूप लिया भगवान शंकर ने। तब फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें दो हमें चाहिए, स्त्री भी चाहिए, योनि भी चाहिए। साथ ही महायोनि तो पृथ्वी को कहा है, इसमें जो डाल दो जो उपज जाता है। तो योनि, अयोनिज योनिज सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे हमारे अमीबा में सीडोपोडिया होते हैं, कई पैर हो सकते हैं, कई सिर हो सकते हैं। तो ये हमारा जेनेटिक और उसमें आ सकता है, जैसे कई फनों का सर्प होना। हमने भी देखा है, एक जगह हमारे यहाँ खेतों के पास था, इस तरफ से तीन चार फन दिख थे उसके। तो ये है सर, हमारी जो रेप्टाइल या जो विकास का क्रम है एनिमल किंगडम का, उसमें कई बार इस तरह के वो देखे गए हैं रूपांतरण। तो जो प्रकृति की वैशिष्ट को प्रतिपादित करते हैं। अब बात आती है बीज की। तो बीज अभी कुछ मैंने बीज का नाम सुना है, सी बीज का, जैसे केरला में चार पांच हैं, वेस्ट बंगाल में है, अभी विशोगा जी बता रहे थे। तो इनके इर्द गिर्द और इनके यहाँ पर जो इकोसिस्टम रहता है, जो पर्यावरणीय व्यवस्था रहती है, जो मैडम ने बताया कि सुबह सनराइज के टाइम, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय विशेष छटाएं होती हैं जो मन को आनंद देने वाली होती हैं। तो ये सी बीजों का भी बहुत पर्यटन के हिसाब से और हमारे जो भी समुद्र से उत्पन्न होने वाले औषधीय द्रव्य हैं, चाहे वो कोरल हो, प्रवाल हो, शंख हो, सीप हो, ये सब के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो शीतवीर्य होंगी, निश्चित ही उसमें पर्टिकुलर सिस्टम के लिए काम करेंगी जो आयुर्वेद के विकास में निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होंगी। यह जानकारी हमें इस आज बीज डे पर अ, हमारे अधिकारी विद्वानों ने दी। इसके लिए बहुत बहुत आभार। और पवन जी, अनंत अनंत आपको शुभकामनाएं कि आप नए नए हम लोगों को अ, हमारे ज्ञान चक्षुओं को नवीन ज्ञान से परिष्कृत करते रहते हैं। मैं तो कहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक नया विषय मिलता है। अब हमारी जो आदत है, तो हम तो उसे आयुर्वेद में ही ले जाते हैं साहब, आयुर्वेद के पोषण के लिए, आयुर्वेद के विकास के लिए। उस आयुर्वेद में वो कहाँ उपयोगी, हमारी ये क्लिनिकली एप्लीकेबल हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य संरक्षण व्यवस्था में कहाँ उपयोगी हो सकता है, कैसे रोगियों को इस तरह के भ्रमणों की आवश्यकता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि सर, हरिओम। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय गुरुदेव का भी बहुत बहुत आभार। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट। थैंक यू।